Hello students, once again welcome back to my YouTube channel, The Magic of Maths. Beta, we were doing the NAS assignment worksheets and we have reached the 7th assignment. Today we will be doing the 7th assignment. But before that, do subscribe to my channel and like and comment in the comment section below. So starting with the worksheet, assignment number 7, 10th Mathematics, LO based worksheet for NAS test preparation. Students, the first question is, the decimal expansion of 7 upon 80 will terminate after how many decimal places? Beta, first of all, we will check that it is in the lowest form. Yes, 7 and 80 cannot be divided on any common number. So it is in the lowest form. Then what I will do is, I will write the prime factors of 80. That is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5. That is 2 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power 1. And in assignment number 6, I told you that whatsoever is the highest power of 2 and 5, डेसिमल एक्सपेंशन करने पे उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होता है. सो इन दिस द हाईएस्ट पावर इज 4. सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 4. Question number 2. The sum of rational and irrational number is always irrational. बेटा कोई भी rational number ले लो and एक irrational number ले लो like √7. अगर आप इसको plus करोगे या minus करोगे, so sum and difference of a rational and irrational is always irrational. Question number 3. You have to give the rationalized form of the number 1 upon √5 plus √2. Beta, rationalization is a very important topic in which means that in the denominator there should be no root sign. So in order to remove this, what I will do, I will multiply both numerator and denominator by the same thing but with the reversed sign. So I will divide and multiply both by √5 minus √2. So when I multiplying numerator 1 by √5 minus √2 gives the same thing, and in denominator you get the formula of a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. So √5 square minus √2 square, that is 5 minus 2 in the denominator, and numerator goes the same. So √5 minus √2 upon 3. So my correct answer is option C, that is √5 minus √2 upon 3. Beta, this question we did in assignment number 6, the last question, that mode is equal to 3 multiplied by median minus 2 multiplied by mean. तो वही जो राइट हैंड साइड पे था, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 2 मीन इधर जाके प्लस हो गया. सो आपने ये फॉर्मूला किया था, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. तो ये 2 मीन यहाँ पे जाके प्लस हो गया. सो ऑन राइट हैंड साइड यू आर लेफ्ट विथ 3 इंटू मीडियम. इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मीन ऑफ 100 numbers is found to be 50. But later on it was observed that one of the number 150 was wrongly taken as 50 at one place. Then the correct mean is, beta, mean, again I am telling you the formula, sum of observations divided by number of observations. ठीक है बेटा. तो अब मेरे पास मीन उन्होंने कितना दिया हुआ है, 100 नंबर्स का मीन इज 50. मीन 50 है, तो यहाँ से मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकती हूँ. आई हैव द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज 100. सो आई गेट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज 50 multiplied by 100, that is 5000. अब इन ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने गलत ले ली. जो नंबर 150 लेना था उसकी जगह पे 50 ले लिया, मतलब कि मुझे 50 नहीं लेना था. तो मैं उस सम में से 50 को माइनस कर दूंगी जो मेरी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, और जो करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशन है उसको मैं प्लस कर दूंगी. 50 की जगह मुझे 150 लेना था तो मैंने 50 माइनस कर दिया एंड 150 प्लस कर दिया. So 150 minus 50 gives you 100. So 5000 plus 100, that gives you 5100. This is the correct sum of observations. This is the correct sum of observations. So now I will find the mean
मीन, करेक्ट मीन निकालने के लिए मैं करेक्ट सम लूँगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो उतनी रही क्योंकि एक माइनस कर दी एक प्लस कर दी। करेक्ट सम है मेरे पास 5100 एंड सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 100, सो आई गेट द करेक्ट मीन एज 51. Okay students, I hope the question is clear to you. In case you have any doubt, then you can message me in the comment section. I'm always there for you. Till then, be happy and please do your assignments on time. Okay students, bye bye, take care.